Biodiversity of India. So this will be from the environment lecture, Biodiversity of India. This is one of the most short lesson in environment. More sequence re पढ़ौनी. I am going through the demand topic wise mu पढ़ौची. So what exactly the diversity? Now word kon लिखा है सुन biodiversity. This is two word. One is bio, one is diversity. Bio means what? Biotic component. Means what? Biotic component. So biotic component को ले जहारो life अच्छी, जहारो कोनो simple life अच्छी. So say life that means could be your tree, that could be tree, that could be elephant, that could be what? Flies, that could be your jackal, cow, etc. Anything is having life, that could be biotic part. That could be the biotic part. Okay. So चाहे ना गोटे छोटिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमरो बायोटिक पार्ट रे आसुची. ना डाइवर्सिटी कहले कोन टाइप्स केते प्रकार अछि. डाइवर्सिटी मींस टाइप्स, बहुत टाइप्स अछि है ना. तो बायोडाइवर्सिटी कहले बायोटिक लाइफ रो डाइवर्सिटी. जेमती आम कहे आम इंडिया को कौन कहुए द मेल्टिंग पॉट ऑफ द सिविलाइजेशंस, द मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस. इंडिया को कौन कहुए मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस. ना मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस कौन कहुए इंडिया को. दैट मीन्स एटी दुनिया सब प्रकार रेस रो लोक देखा जाए. एटी तुमको ऑस्ट्रेलियड देखा जो, मंगोलॉइड देखा जो, कॉकसॉइड देखा जो, निग्रोइड देखा जो, सब प्रकार लोक देखा जाए. से इंडिया को कहुए melting pot of races. Like that, when I say diversity means types, means what? Different types. Simple, I would say different type. ताको कहा diversity. जेमती एठी देखो ये particular picture रे देखो. एठी तमरो hen अछि, there is also fly, there is dragonfly, there is snake, there is trees, there is fly, jackal, crab, etc. hawk, butterfly, सब किछ अछि. This makes a diversity. एथरे कोन डाइवर्सिटी भाव खाली काओ थिबो, खाली काओ 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 चारियाडे. दिस इज नॉट डाइवर्सिटी. दिस इज व्हाट? ये गोटे स्पीसीज रो पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइवर्सिटी. पॉपुलेशन कोले गोटे स्पीसीज रो नंबर बढ़िबा को कहै छै किबा पॉपुलेशन. जे तो हम कहै छै पॉपुलेशन, ध्यान से सुनिबो. पॉपुलेशन अर्थ कोन? मतलब गोटे स्पीसीज रो संख्या बढ़ौची. सिंपल हम कह गोटे स्पीसीज रो संख्या बढ़ौ. जेमति ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ि गेला कोले ह्यूमन गोटे स्पीसीज तार संख्या बढ़ुची से हम ताको कहते ह्यूमन पॉपुलेशन रो स्पीसीज बढ़ बा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ुची. बट जेतरा में डाइवर्सिटी कहूचे, डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? एथि मतलब एलिफेंट आसी परे, प्लांट आसी परे, क्राप आसी परे, डियर आसी परे, फिशेस आसी परे, देन माइस आसी परे, फ्लाइज आसी परे, ड्रैगन आसी परे, स्नेक, व्हेल्स आसी परे, एक्सेट्रा. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. तेबे हम देखिबा सम ऑफ द डेफिनेशन. फटाफट हम कवर करबा एबे. बायोडाइवर्सिटी होप मीनिंग बुझा पड़ी जो बायो एंड डाइवर्सिटी दीटा वर्ड को मिसेले हमें बायोडाइवर्सिटी कहबा. बहुत सिंपल बुझाऊ छी, एमते नै डिफिकल्ट करू छी. बायोडाइवर्सिटी दैट मींस कोन? वेराइटी ऑफ व्हाट? प्लांट एंड एनिमल्स. सेतबे मु तुमको कहितली गोटिए वर्ड बायोटिक फॉर्म. दैट इज व्हाट? बायोटिक फॉर्म. तो बायोटिक फॉर्म ता गोटे ट्री हे परे, बायोटिक फॉर्म ता गोटे काउ हे परे, बायोटिक फॉर्म ता गोटे बैक्टीरिया हे परे, बायोटिक फॉर्म टा गोटे ह्यूमन हे परे. तो केते प्रकार बायोटिक फॉर्म अछि? दैट मींस हैविंग लाइफ in a particular habitat, in a particular habitat. So biodiversity कहले diversity of the variety of flora and fauna. So let's say I will say it would be flora and fauna. Flora and fauna रो diversity over a region. Okay, ताको हम कहबा biodiversity. Flora fauna रो डाइवर्सिटी ओवर ए रीजन. मतलब कंपोनेंट्स कोन? एथरे बहुत सारा स्पीसीज रिचनेस थाए, स्पीसीज इवननेस थाए. देखो ताले बायोडाइवर्सिटी को हमें केमिति मेजर करू, बहुत इंपोर्टेंट. बायोडाइवर्सिटी जानिबा केमिति वेदर दिस इज ए हेल्दी बायोडाइवर्सिटी और नॉट. दैट वुड बी मेजर्ड थ्रू द स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस. द मीनिंग कोन? स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस. ना इवननेस कहले लेट्स से हम कहबा 5टा 5 माइस आर देयर, 5
snakes are there, 5 amok ଅଛି, so they are having maintaining a good relation, healthy ଅଛି, and then ki gotiye tiger, thousands of deers are there, so this is not evenness. Okay, so that means আমি দেখো তো species richness कहले कोन, it measure the number of species found in that community. species richness कहले सेही species टा केते अछि, ध्यान से मन कहबो सेही species टा केते अछि. Let's say मु कहली species richness कोन ना measurement of what biodiversity, ये कोन measurement of biodiversity को हमें दी प्रकार मेजर करि परिबा. मेजर कंपोनेंट कोन ना species richness आ हला evenness. Evenness जेमती देखो एठी अछि 4टा टाइगर, 5 deer, 6 rabbits, so they are having maintaining evenness. Okay, but आउ गोटे केस रे देखबा, in the case B 1 tiger, 6 deer, 8 rabbit, so this is different case from the case A. Case A is different, case B is different, है ना. that means हम कहबा species richness टा कोथर, so evenness is A and B is the richness. So B case रे जदि हम देखिबा richness and that is having the evenness, so A has more evenness than the sample of B. A रे evenness अधिक मतलब closely 4 5 6, किंतु आर देखो 1 6 8, so that means हम कहबा evenness more in compared to the B case A case रे. In the case A evenness is more. Okay, जदि evenness टा कमी जाउची, low evenness means what, some species is dominant, some species भाबो जेमते कि गोटे टाइगर अछि, 1 tiger, just imagine 100 elephant is there, that means one species is dominating, elephant रो संख्या अधिक, ताले ए पूरा लैंडस्केप को की डोमिनेट करि रखिछि एलिफेंट. that means एठी हमें कहबा स्पीसीज रो गोटे स्पीसीज रो डोमिनेंस अछि एठी, है ना. तो गोटे बैलेंस्ड नहीं, तो बैलेंस्ड रहले ताको हम कहबा इवननेस, बैलेंस्ड रहले हम ताको कहबा इवननेस. ओके, होप एबे बुझा पड़जिवो. तो स्पीसीज रिचनेस कहले सेही स्पीसीज रो संख्या केते अछि, हाउ हेल्दी. लेट्स हम कहू ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, तार संख्या बहुत कमी जाइछि, ताले स्पीच तार स्पीसीज रिचनेस कमी चिना बढ़िछि, ऑब्वियसली डिक्रीज्ड हो जाइछि स्पीसीज, कारण संख्या बहुत ही कम, इज नॉट हेल्दी. ओके, डन एवरीवन, है ना. तो स्पीसीज रिचनेस कहार अधिक अछि, फॉर एग्जांपल मु तुमको चीता, इंडिया रे तो रिचनेस कोन टोटल स्पीसीज ही 2-4टा अछि और रिचनेस कोड आसीबो. डन. Now species हमें देखिबा richness and relative abundance. So richness कहले total number of different species in that community, in that community, in that community I mean, let's say मु कहले tiger, let's say I will say tiger ना, tiger गोटे species, तार गोटे community अछि, है ना, तार भी छे black tiger हे परे, white tiger हे परे, अमुक हे परे, tiger, बस tiger निजर गोटे diversity अछि, है ना. ठीक अछि, निजर कहले इंट्रा स्पीसीज हे परे, इंटर स्पीसीज हे परे. रिलेटिव अबंडेंस कहले कोन, सपोज हम जेमति देखुतले, लेट्स से डियर अछि, डियर इक्वल टू 5 and cat equal to 7 and tiger equal to let's say 4. relatively they are पाखा पाखी अछंती, relatively they are having good number. जेतले मु कंपेयर करू डियर को टाइगर सहित relatively they are equal, सेति में हम ताको कहूची evenless और abundant species evenness maintain होची, है ना. तो मेंटेन है कि रहइबो. तो स्पीसीज रे जदि हम देखिबा दैट मींस evenness कहले रिलेटिव अबंडेंस ता रहइबो, रिलेटिव अबंडेंस मेंटेन है कि रहइबो, जोटा कि देखि पर. बट गोटे स्पीसीज रिचनेस कहले जने डोमिनेट करिवो, और स्पीसीज evenness जदि कमी जो कोन हिजो सम स्पीसीज विल डोमिनेट द लैंडस्केप. एबे हम देखिबा अल्फा बेटा गामा डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन एथरो एएसओ रे आस्थला. अल्फा गामा जदि हम देखो डाइवर्सिटी ना, अल्फा कहले कोन गोटे इकोसिस्टम भितर डाइवर्सिटी को हम देखिबा विद इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम. लेट्स हम कहबा फॉर एग्जांपल चिलिका, एक मिनट,
Alpha diversity means the diversity within an ecosystem. गोटे इकोसिस्टम भितर केते प्रकार स्पीसीज अछि. फॉर एग्जांपल पॉन्ड को आमे निजवा गोटे इकोसिस्टम तथरे केते प्रकार डाइवर्सिटी देखा जाउछि. Then as for beta means between the ecosystem, between the two different ecosystem भितर diversity हम देखिबा ना. Then gamma means overall. For this picture you can see when I say alpha, a small area r भितर diversity केते. When I say beta कहले between, beta means what? Between, like this one, this two अंक भितर diversity कोन. Let's say this one a, this one b कहले beta कहले between, or let's say these two को तो मैं नहीं परिबो है ना. That would be beta. A for alpha कहले alone है ना, it would be alone. Then come gamma means whole landscape. What? Whole landscapes, पूरा सब तो largest area, पूरे area रे. For example मु कहबी India, so let's say this one I have taken India, this part of India, so it would be whole of India रो diversity को हमें कौन कहबा? Gamma diversity. If I take Chilica, let's say if I take Chilica, that means it would be alpha. गोटे जदि मो चिलिका को बे बंगाल को कंपेयर करी तो दैट वुड बी बेटा बिटवीन. ओके, एंड होल रीजन रे देखा जो दैट इज द गामा डाइवर्सिटी. डन एवरीवन? ओके, सो दिस इज द बेसिक डाइवर्सिटी. तो जदि हम देखिबा ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थिला एंड ए सॉरी एटा आस्थला बी वर्ष तुमरो क्वेश्चन. ओके, so this one fine. Now come to the genetic diversity. Now genetic diversity means कोन? For example tiger हम कहले tiger रो genetic diversity अछि जेमति गोटे white थाई पारे, गोटे तमरो रॉयल बेंगल टाइगर हे पारे, आ गोटे तमरो कोन हम जाको कहचे कोन से नाटा बोली जोटा मिक्स थाई हमरो जाको कोन कहथि मेलानिस्टिक टाइगर हे पारे, मतलब ब्लैक एंड जो तमरो ब्राउन सॉरी रेडिश दीटा मिसामिसी थबो. So that is genetical diversity of the, or let's say clouded tiger भी हमें कहि परिबा. clouded. hello हाँ को hello hi Ipsit को is it audible to all? कौन आइला ऑडिबल होछि वॉइस समस्त को? Yes sir, audible. Clear sir? Okay, thank you. तो होप अल्फा बेटा गामा तो बुझा पड़ी जइबे एबे आराम से है ना. एथरो क्वेश्चन पचारछि और बहुत इजी मथ्य. जेतरा हम कहचे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहले सेम स्पीसीज रो जेमति टाइगर कहली, टाइगर गोटे वाइड हे परे, गोटे तमरो जेमति नॉर्मल कलर देखाउछि, आ गोटे मिक्स्ड हे परे जेमति ब्लैक एंड रेडिश मिसै कि थाए जाको मेलानिस्टिक टाइगर कहउचे, आ गोटे तमरो पोलार हे परे जेमति क्लाउडेड लेपर्ड्स हम कहउचे. तो ये कोन जेनेटिकल डाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज. दैट मींस हमको टोटल नंबर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of same species, same of a species, सही species रो केते प्रकार variety. ओके, जेमति डॉग अछि हमर डॉग रो भी बहुत प्रकार variety अछि ना, बुझि परछो नै? ओके, सो दैट कुड बी द जेनेटिकल डाइवर्सिटी. जेनेटिकल डाइवर्सिटी जेते बेले को हाजिबो सिंगल स्पीसीज रो डाइवर्सिटी. लेट्स से मु कहबी डॉग रो बहुत बड़ा variety अछि, तो से कोन जेनेटिकल डाइवर्सिटी ऑफ द डॉग. ओके, सो दैट कुड बी लाइक दैट. For example, it is a single species might show high diversity at a genetical level, like Homo sapien of Chinese, Indian, African, etc. Someone called diversity अछि. Now we आसीबा bio. ये word देखियो bio. Biome कहले कोन? एठी कहले कि देखा species diversity. When I say species diversity, that could be your flora ही परे, that could be your flora species ही परे, or it could be fauna species है परे. flora कहले plant वगैरह, fauna means animal, so that could be. तो ये देखिबा species diversity कहले केते प्रकार species रहउची. जेमति हम कोइ गोटे पोखरी अछि, भाबो गोटे पॉन्ड अछि, ओनली सेथरे
लेट्स से तुम कहबो रोही माछ अछि तो दैट मीन्स डाइवर्सिटी नाही सेतरे रोही माछ अछि सेतरे आउ कोन कोन माछ कंकड़ा चुंगुडी अछि दैट मीन्स दैट इज हैविंग डाइवर्सिटी ओके तो एबे जदि मु गोटे क्वेश्चन पचारिबे एठी सिंपल क्वेश्चन if I ask कि species diversity will be more in sanctuary true or false anyone species diversity more in sanctuary Yes, sir. Yes, sir. answer Yes, would sir. Right, sir. Right, sir. answer would be what no कौन पई अरे जेतेबेले सैंचुअरी करा जाय स्पेशली गोटे स्पीसीज पई करा जाय जेमिति चंदका सैंचुअरी कौन पई एलिफेंट पई अच्छा डाइवर्सिटी आसीबो कोडू ताले गोटिए प्रकार होला दैट मीन जेनेटिकल Yes, डाइवर्सिटी बट डाइवर्सिटी कमी जबो किंतु जेतेबेले मु कहूची नेशनल पार्क सेतरे सब प्रकार स्पीसीज रहबो ताठो आउरी अधिक कोठी बायोस्फीयर ताले सबुठ अधिक कोठी रहबो डाइवर्सिटी बायोस्फीयर ना हबनी बे बुझा पड़िबनी है ना yes, Done? sir. तो टिके भाबिबो हॉट बॉडी रे देई दबनी आंसर है ना टिके दिमाग लगेला ही जीवो सो दैट मींस यदि मु नेशनल पार्क सैंचुअरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व को कंपेयर करिबी बायोस्फीयर रिजर्व विल हैव मोर डाइवर्सिटी व्हाई यदि मु पचर व्हाई कारण सैंचुअरी सबले गोटे डेडिकेटेड स्पीसीज में करा जाय बट बायोस्फीयर सेति में करा जायनी बायोस्फीयर रे कोन लैंड प्लस एनवायरनमेंट प्लस ह्यूमन प्लस आम कहवा कौन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन करा जाए तो बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कंजर्व द नेचर एंड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइड स्केल रे करा जाए ऑब्वियसली हेटी रॉक को भी कंजर्वेशन करा होची एनवायरनमेंट को फ्लोरा फौना ह्यूमन सब जा भी हो एबे हम देखिबा तो स्पीसीज दैट मीन्स जेतल को स्पीसीज डाइवर्सिटी कले बहुत प्रकार जीव जंतु सेठी रहउची गच्छर भी होची फ्लोरा रो भी डाइवर्सिटी होची जेमति कि लेट्स से तुमको सर ट्री लेट्स से सेठी बाउंस गछ थाई पर दैट कुड बी बांबो दैट कुड बी साल दैट कुड बी सागवान दैट कुड बी अदर ग्रासेस दैट कुड बी रोजवुड दैट कुड बी सैंडलवुड दैट कुड बी रेड सैंडर तो एमति डिफरेंट स्पीसीज थिबो सो द डाइवर्सिटी बढ़िबो खाली साल 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 ना ना सेटा स्पीसीज रिचनेस दैट इज नॉट डाइवर्सिटी Done everyone? Richness, diversity, difference. Now you can distinguish. ना ये सुनो. जदि जीरो अप्लाई हेची, तुमको कहा जो जीरो रो मीनिंग कौन? If I say zero means infinite diversity. ध्यान से सुनो ये बहुत important. जदि कोनोसी बायोडाइवर्सिटी कोनोसी गोटे लैंडस्केप कथा मु कहबी जहार तुमको कहा जाय दार वैल्यू होची जीरो. इन बायोडाइवर्सिटी जदि वैल्यू मु जीरो देबी ता अर्थ हाईएस्ट डाइवर्सिटी और जदि मु 1 दउची दैट इज ओनली वन स्पीसीज रिप्रेजेंट ध्यान से मन रखबा को टिके जीरो मीन इनफिनाइट बहुत प्रकार फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ओशन रे फ्लोरा फौना सो मच दैट मीन्स इट वुड बी जीरो ना बुझा पड़िबनी इनफिनाइट डाइवर्सिटी यू कांट काउंट द डाइवर्सिटी ऑफ ए ओशन सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन द ओशन ओके तो एक हमें देखले बायोम कोन तुमको सर बायोम कोन बायोम होची कोन सिंपल गोटी लार्ज एरिया हैविंग or representing one kind of forest for example deciduous forest मु कहबी evergreen forest just imagine करो evergreen forest भितर बहुत सारा पीसीज थाई परे बट evergreen forest को मु गोटे कहली बायोम deciduous forest से आउ गोटे बायोम तो बायोम कहले कोन गोटे क्लाइमेटिक रीजन को रिप्रेजेंट करे जो उथरे फ्लोरा आसे तो गोटे यूनिक टाइप ऑफ फ्लोरा रिप्रेजेंट करे बायोम है ना जीरो रो मीनिंग वन रहिबो 1 रो मीनिंग वन रहिबो तो जीरो अर्थ भाबिवन के एठा नाही जीरो अर्थ मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहले कोन कहले सेम स्पीसीज केते अछि बहुत नंबर हमको देखिबा बहुत सारा देखा जिवो एबे हम देखो स्टेबल कम्युनिटी मींस there is not much more variation in the productivity from the year to year they are maintaining their what population and they are कौन आम कहबा रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू द ऑकेजनल डिस्टर्बेंस है ना सो दैट से माने कौन सस्टेनेबिलिटी अधिक से मानकर ना इसमें हमें स्पेसिफिक एंडेमिज्म कौन एंडेमिक ना सुनी एंडेमिक सुनी तो वर्ड गोटे है एंडेमिक
आउ गोटे कोन थाए एनीवन एनीवन Pandemic. कोन हैला Pandemic. पैंडेमिक अच्छा ओके ठीक अछि पैंडेमिक लिख देली आउ कोन अछि एंडेमिक पैंडेमिक आउ कोन अछि नेटिव आउ गोटे थो नेटिव दिस आर द वर्ड तो हमें देखा आगे एंडेमिक अर्थ कौन के ओनली एंडेमिक मीन्स ओनली फॉर एग्जांपल इफ आई से कंगारू 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 केवल ऑस्ट्रेलिया रे मिलिबा आ कोठी मिलिबा नाही दैट मीन्स ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली दैट मीन्स दिस इज एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया geographically confined to Australia आउ दुनिया रे कोठी मिलिबो नाही that is why endemic no other places will have endemic रो मीनिंग हैला सेया केवल सेठी confined when I say pandemic everywhere एटा कोन everywhere है ना और सिंपल आई वुड से ऑल चारियाडे देखा जीवो बट नेटिव रो अर्थ कोन सेठी मिले that is found in that particular region but that not may not be a endemic species but native of that area may not be an endemic species okay now hotspot कहले कोन actually hotspot कोन बुझाए the endemism रो richness को बुझाए simple मुझे कहबी simple word रे endemism रो richness को बुझाए how much endemic species flora and fauna out there in a particular region and their threatness and their what threatness that is the hotspot also hotspot ro though the hotspot is having different connotation and definition hotspot हवा पई कोनोसी रीजन को मिनिमम 1500 to 15000 केवल तमर कोन रहबा दरकार जोडा कि फ्लोरा स्पीसीज रहबा दरकार देन बहुत सारा एंडेमिक स्पीसीज रहबा दरकार फ्लोरा एंड फाना सो दैट ताको हमें गोटे हॉटस्पॉट बोली काउंट करिवो अदरवाइज नो तो सिंपल तुमको एंडेमिक अर्थ सेठी केवल मिलिबो पैंडेमिक मींस एवरीवेयर हॉटस्पॉट मींस हमें कहबा गोटे रीजन वेयर बहुत टाइप रा मतलब इट्स ए वेरी मच रिचनेस इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी नाउ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी व्हाट एबे हमें देखबा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ecological diversity means different type of ecosystem what different type of ecosystem like let's say mangrove is a ecosystem coral wetland estuary these are what different type of ecosystem that means diversity in ecosystem I would say so ecological diversity means what ecological diversity refers to the different type of habitat so when I say habitat equal to what equal to ecosystem habitat equal to ecosystem so that जेमते desert गोटे ecosystem lake रो गोटे ecosystem अछि coral रो गोटे अछि mangrove रो अछि wetland रो estuary so everybody has its own everybody has its अमु क्लास अछि so everybody has its own ecosystem or habitat okay that means जेतरा हम कहू छी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी the diversity of habitat or ecosystem अच्छा जदि मु कहबी इंडिया is having huge ecological diversity true or false if I ask a simple question India is having huge ecological diversity true or false it's a true केमिति India is having evergreen forest India is having lake India is having snow field अच्छा स्नो रे भी तो गोटे इकोसिस्टम अछि कि नै सेठी स्नो लेपर्ड रहइबो पोलार बियर रहइबो एसु अछि ता पे गोटे इकोसिस्टम डेजर्ट रे गोटे इकोसिस्टम मैंग्रोव रे गोटे इकोसिस्टम कोस्टल रे गोटे इकोसिस्टम कोरल रे गोटे इकोसिस्टम डेसिडस फॉरेस्ट रे गोटे इकोसिस्टम गैंगटिक प्लेन रे गोटे इकोसिस्टम सो इंडिया इज हैविंग नंबर ऑफ इकोसिस्टम दैट मींस ऑल आर द हैबिटेट सो इंडिया रे तो गोटे प्रकार लैंड नो ना कि खाली डेजर्ट खाली प्लेन एमते तो नहीं एक मिनट
So that means आम कह इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सो मच और शुणिले आश्चर्य हम एनवायरमेंट रे लास्ट ईयर 500 मार्क रो आसला टोटल ओपीएससी रे आकु कहीं कैलकुलेशन करके कही ना कि टोटल मार्क केते आसला ओपीएससी रे लास्ट ईयर 500 मार्क्स रो शुणिले आश्चर्य लगे बट दिस इज ट्रू फैक्ट केमिति तुमको प्रिलिम रे लगभग 20 मार्क्स आसबो 10टा क्वेश्चन कले 20 मार्क्स तुमको इंग्लिश रे पैसेज आसो एनवायरमेंट रो ओडिया रे पैसेज आसो एनवायरमेंट रो एसए रे आसी एनवायरमेंट रो जीएस पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल जुआडे देखो एनवायरमेंट ही एनवायरमेंट बट एनवायरमेंट के लोक कौन पढ़ती आउ एबे तो टाइम नहीं मो पाके मु गोटे गोटे बुझे बुझे पढ़ेबी दिस इज क्रैश कोर्स है ना सो यू कांट टेक दिस वन लाइटली है ना बिकॉज एथरे मैंग्रोव वगैरह सब आसी जाबी एंटीमिजियम कहले कोन केते प्रकार स्पीसीज सेठी देखा जाउची हाउ मच स्पीसीज एंडेमिक केते हाउ मच एंडेमिक स्पीसीज आर देयर लेट्स से एठी लेके देयर आर more than what I would say 2 lakh species in India which are several are confined to India that means endemic that means say 2 lakh species is only found in India can you imagine only found in India out hands this is the trick to study the biodiversity that means jo guda India re endemic that will be the question they will ask the question why great Indian bustard only found in India that is why question asked from great Indian bustard Bengal floricon only found in India that is why they asked from the Bengal floricon dugong they are found in all over India but somehow they are also found in India that is why they ask jota India re kebol mile like I will say the Malabar civet they are found in India only exclusively they will ask the question from there so those are endemic to India like sandalwood like Mysore sandalwood दुनिया रे केवल एठी मिलिबा कोठी मिलिबो they will ask from there red sandal दुनिया रे कोठी मिलिबो इंडिया रे मिलिबो से स्पीसीज ता that is why they ask so जो endemic species আছে साकू यदि तमे आइडेंटिफाई करके पढिबो that would be a game changer otherwise हमको सब इंपोर्टेंट लागिबो चाबियो keystone species now keystone species कहले कोन आगे पिक्चर में देखे दीज आर द कीस्टोन स्पीसीज तुम कहो सर ये तो किछि बुझा पड़ला कीस्टोन आप खाली पिक्चर देखे देले नाउ कम टू द पॉइंट प्रथम हम जानबे कीस्टोन स्पीसीज कहले भाबो कीस्टोन स्पीसीज हला जहा को ऐड कले बा सब्सट्रैक्शन कले पूरा इकोसिस्टम ऊपर इंपैक्ट पड़िबो दैट मींस लेट्स से गोटे जगह रे टाइगर अछि देयर आर टाइगर देयर आर डियर्स ओके एलिफेंट इफ आई remove the tiger from that ecosystem what will happen deer रा संख्या बहुत बढ़ी जिवो elephant रा संख्या बहुत बढ़ी जिवो so that ecosystem ता imbalance हे जिवो केमिति deer संख्या अधिक हे गले गछ पत्र खाली कोन कहबो माने से माने कोन गछ पत्र सब खाइ के सफा कर देबे आ किछ रहिबो नाही तो that means कोठी ना कोठी फ्लोरा रा कमी जिवो फ्लोरा रा कंसंट्रेशन कमी जिवो से खाली गछ पत्र खाइ सब सफा कर देबे that like मतलब कोनते ने के लोकस्ट that means the tiger रहिबो ताकू मार दबो किछि मेंटेन हे कि रहबो सो इकोसिस्टम विल बी मेंटेन ना बुझा पड़िबोनी ओके सेथि पई चीता को आना गला पुनी इंडिया को सो दैट चीता जेतळ रहिबो से डियर को किछि खाइ दबो सो दैट जो इकोसिस्टम तो बैलेंस हे कि रहिबो सो दैट इज व्हाई जस्ट इमेजिन कर इफ आई रिमूव द टाइगर होल इकोसिस्टम विल चेंज दैट मींस द सही स्पीसीज को हमें कीस्टोन स्पीसीज कहबा जारो एडिशन सब्सट्रैक्शन रे होल इकोसिस्टम ऊपर इंपैक्ट पड़िबो दे आर द टॉप प्रेडेटर लाइक टाइगर लियन क्रोकोडाइल एलिफेंट एक्सेट्रा दे आर कंसीडर्ड टू द कीस्टोन स्पीसीज ओके जो मनकर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़िबो है ना एंड देयर कंजर्वेशन इज ऑट टू बी डन एवरीवन ओके these are the keystone species now foundation species kono foundation species now foundation species kole they are basically a dominant primary producer bas simple primary dominant primary producer jaha jogu बाकी माने आसिकी कॉलोनी रे रहिबे है ना इकोसिस्टम बोथ इन टर्म्स ऑफ अबाउंडेंस एंड इन्फ्लुएंस फॉर एग्जांपल तो देछि द केल फॉरेस्ट एंड द कोरल इन द भाबो जदि कोरल न रहिबो एटा सब बेस्ट एग्जांपल
ताले फाउंडेशन स्पीसीज कौन ना जी रहिले जे समस्त को अट्रैक्ट करिवो जदी कोरल अछि ताले सेठी की फिशेस आसीबो सेठी की स्नेक्स आसीबो सेठी की क्रैब आसीबो सेठी श्रीम आसीबो नंबर ऑफ स्पीसीज दे विल कम टू कॉलोनाइज दैट रीजन एंड डाइवर्सिटी विल इंक्रीज ताले प्राइमरी लोक किए कोरल कोरल जो माने आसिले है ना तो ये सब पूरा गोटे डाइवर्सिटी फॉर्मेशन हो ताले ताकू कह जाय फाउंडेशन स्पीसीज डन एवरीवन फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड आम कहवा लेट्स से ग्रास भाव ग्रास रहिले स्नेक आसीबो चूहा आसीबो सेथरे केते प्रकार झेंटिका आसीबे तांको पर फूड चेन सो लाइक दैट बेसिकली दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर हे पारिबो ही नाही कारण सेकेंडरी प्रोड्यूसर बंचिले प्राइमरी प्रोड्यूसर रहले से सेकेंडरी प्रोड्यूसर आसी कि रहइबो ता पाखरे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कोरल रहिला सो दैट फूड मिलिबो बाकी माने आसीबे ना बुझा पड़िबो फाउंडेशन स्पीसीज सो फाउंडेशन स्पीसीज ऑलवेज इट वुड बी प्राइमरी प्रोड्यूसर ना डन ना बुझा पड़िबो एटा एंड कीस्टोन स्पीसीज इज टॉप प्रेडेटर फ्लैगशिप स्पीसीज देन हम देखियो फ्लैगशिप स्पीसीज ना फ्लैगशिप स्पीसीज कौन फ्लैगशिप स्पीसीज कौन एनीवन किछि बुझा पड़ुची जहा पढ़ा होची एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. एबे फ्लैगशिप स्पीसीज कथा कौन लेट्स से मु तुमको गोटे कंडीशन देबी तमे बुलिया पे जाइचो भीतर कनिका मु पचारिबी व्हाट इज द फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ भीतर कनिका दैट मींस आर ट्रिक हैला जोथि पई भीतर कनिका जाना जाय कोन पई कम सर क्रोकोडाइल बस दैट इज द फ्लैगशिप स्पीसीज लेट्स से तमे जाइचो सातकोशिया मु पचारि फ्लैगशिप स्पीसीज तुमको सर कोन ना एठी थंटिया कुंबुर दैट इज द व्हाट कोन कहते द घरियाल जोथि पई जाना जाय से इकोसिस्टम दैट इज द फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ दैट रीजन तुमको सर कोन एमिति एटा तो किछि एमिति तो आपन कहउछन्ते गोटे मुंडा मेथड रे ताले डेफिनेशन गोटे भलो कहंतु भलो डेफिनेशन भी अछि बिल्कुल ताले भलो डेफिनेशन कोन ना गोटिए स्पीसीज जहा को देखि कि अलगा स्पीसीज अछि बोली अनुमान करी हबो जदि गोटिए फॉर एग्जांपल इफ आई से गोटे टाइगर लेट्स से इफ आई से ये टाइगर जदि गोटे जंगल रे टाइगर देखिया को मिलिला दैट मींस सेठी डियर पक्का थिबो डियर जदि अछि सेठी घास थिबो कि पत्र थिबो गछ लता नल से खाइ कि बंचिबो कोन दैट मींस टाइगर हमकु रिप्रेजेंट करूची that this ecosystem is healthy ecosystem that is why tiger would be the flagship species by seeing the tiger I can predict the ecosystem of that particular region na bujha padibani so that the flagship species will be conserved fast jemti ki lekha is Indian tiger African elephant giant panda so they are the indicator of that environment that is why indicator of that environment जहाँ को मैं देखी के सो दे आर द फ्लैक्सिस बस किछे नहीं तुमको कहै नीलगिरी जाइछो बुले भी तुमको कहै नीलगिरी फ्लैक्स तुम सर नीलगिरी थार सिंपल तुमको सर कोन मु कहबी लेट्स से दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार दैट इज द डुगोंग दैट इज व्हाट डुगोंग फ्लैक्सिस स्पीसीज व्हाट डुगोंग डन एवरीवन लेट्स से मु कहबी कांगचेंगडोंग और द कोल्ड डेजर्ट दैट इज द व्हाट कोन हो कोल्ड डेजर्ट और कोन हो obviously snow leopard done everyone here you can see the flagship species कहले ए अच्छे माने बाकी समस्त अछंती ये अच्छे आरो तो गोटे रहइबो ना ये किए टॉप प्रेडेटर आर प्रे तो रहइबो ना आर प्रे न रहले केमति बंची छी ताले आर प्रे पक्का अछि जाको खाइ की बंचू छी ए देखो डुगम कहितले डुगम भी अछि दे आर व्हाट दे आर द इंडिकेटर ए अच्छे माने आरो खाइबा अछि ए अच्छे माने सेही प्रकार गछ लता अछि so these are the what flagship species done everyone flagship species को देखले हमें environment तो flagship species are the indicator of that environment यदि flagship species मरी जाउ छे ना that means environment ही खत्म okay biodiversity in India थाले हमें कौन पढ़िले flagship species foundation species keystone species ecological diversity endemism species what stable community कोन जीरो कोन वन रिमेनिंग कोन अल्फा बीटा गामा एथुर सब क्वेश्चन आसुची रिचनेस कोन इवनेस कोन बायोडायवर्सिटी कोन सो बहुत सारा जिंस में पढ़ले ओथुर गोटे क्वेश्चन पक्का आछबे त किछ डाउट नै now come to the biodiversity of India is rightly called as the mega diverse country or the one of the highest biodiversity found in this land
23.39 geographical area under the forest cover. Just imagine karo almost 23% area amar geographical cover asuchi. That means forest diversity am pakre achi. Hana, almost all types of flora, I would say what flora we are having, so that is the diversity. Just 2.4% of the land, किंतु देखो एटी केते 7% of recorded species दुनिया रो है ना. 9th in terms of bird, 5th in terms of reptile, 7th in terms of mammal. This makes the richness of India. Can you see this one? Could you please? The species richness of India. देखो कहते 7th in terms of mammal. कहले वर्ल्ड रो 7th रैंक रे आसुची एठी बहुत सारा mammal अछि और different types रो. 9th in terms of birds. So India also known for the birds, home to the birds. 5th in terms of the reptiles. So endemism जे हम देखो vertebrates भी अछि India रे position 10th. Then 5th in terms of reptiles, 7th in terms of amphibians. So these are the data. These are the data you need to present for the diversity of India. Let's say last year question asitala environment upare gote essay. This data you could have written over there. Now we are India represents 2 realms, 5 biomes, 10 biogeographical zones, 25 biogeographical provinces. This is very important. Again I repeat. So let's move on. Okay. Here we will correct this one. It would be 28. We will correct this one. So move on to the realm. So realm kono, biomes kono. Okay. प्रथम तो realm कहले कोन गोटे बहुत बड़ geographical area को कहा realm. Biogeographical realms अल्ला कहले मतलब realm रो अर्थ मु बुझौछि सुनो सिंपल मु माने को अच्छा इंडिया मैप ड्रा करके मु बुझाई दउछि एते पढिबार किछि लाभ नै है ना. लेट्स से मु इंडिया मैप ड्रा करली है ना. दिस वन इज योर इंडिया मैप. ओके जस्ट बिलीव हिमालय एतिकी एरिया हमर हिमालय रे गला ये एरिया पेनिनसुला रे गला ये गोटे realm हे गला ये गोटे realm हे गला खत्म. तुमको सर केमिति बिकॉज़ आर जो ज्योग्राफिकली जस्ट अ मिनट हेलो मु क्लास रे अछि कोन कहउतला ना कोन हां 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 हो बढ़िया आ सेमिति हेले मो पिला भलो पाइबे ना सेमिति तुम पढी छी हला. ओके थैंक यू सो मच. हम होते रात्रि कथा होछ ना. So sorry guys. So हाँ realm कथा कहूतले. Now see Himalaya formation जो है that is a different geographically तारा different. Peninsula geographical difference. तेणु करी जेतला में realm को biogeographically they are large area. Their formation is different. तो हिमालय रो जो ecosystem सेटा different देखा जिवो. Peninsular ecosystem different देखा जिवो. So a realm is a continent or subcontinent को हमें कहू. Unifying feature of the geography and flora fauna. सेथे पे हमरो हिमालयन रीजन आसीबो है ना. गोटे आसमा तो हिमालयन रीजन जो आपको हमें पैलेटिक realm बोली कहू छी एंड Malayan region of the rest of the subcontinent. तो दीटा हमरो realm अछि. तले इंडिया कोथरा आसुची this one and what is this one. Okay, so we are having 2, that is the Palearctic kole Himalayan region. So Palearctic kole जो हमरो Himalayan region टा Palearctic रे जाउची and Indo-Malayan realm kole तमरो rest of India. That means this portion of India is here and Himalayan portion of India it would be Palearctic. ना बुझा पड़िबनी. Done everyone? बुझा पड़ुची everyone? Yes, yes. अरे बुझा पड़ुची ना सब बाउंस तो होनी खागु. Yes, sir. No, sir, clear. Speaker off करिए. Now comes to the 5. बाकी देखि दियो केतेटा तमरो realm अछि जेमति तमरो Nearctic अछि, Afro गला, Indo-Malayan गला, in that is Oceania, Australia अछि. So these are the India रे हमरो दीटा आसुची खत्म. Here you can the types. ये देखो तमरो
here is the paletic एथे आसुची है ना the neretic. So these are the different biomes of India. Biomes कहले कोन मु तुम कहली biomes अर्थ गोटे प्रकार फॉरेस्ट जेमति कि alpine ये गोटे प्रकार coniferous गोटे प्रकार desert गोटे प्रकार deciduous गोटे प्रकार evergreen गोटे प्रकार. So these are the forests found in India. So single type of forest सबू forest deciduous forest let's say deciduous dry and आको पुट कर देले गोटी हे गला biome. एवरग्रीन को पुट कर देले आउ गोटे बायोम. डेजर्ट को पुट कर ले आउ गोटे बायोम. कॉनिफेरस आउ गोटे. सो दे आर रिप्रेजेंट ए सिंगल टाइप ऑफ फॉरेस्ट. सिंपल आई वुड से सिंगल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. दे आर बायोम. बायोम आर व्हाट? पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. Biomes are the part of biosphere. Again I repeat, biomes are the part of biosphere. Biosphere कहले जोठी life possible. That means let's say मु कहबी polar region, extreme polar region, that is not biosphere आसु नहीं. Let's say Mariana Trench, that is not biosphere. Life can't be possible over that region. So biomes are the what? Where life can sustain. That is the biome. Biosphere. That is the biosphere. Biosphere गोटे पार्ट हैला होची biome. Biome means flora को बुझाए कोन? That is the flora को बुझाए. Is it fine? है ना? So when I say biosphere, India, भावो India. India is a large biosphere area कहले ताकू डिवाइड मतलब इंडिया मैप तो ड्रॉ करूनी मु ड्रॉ तो करिया बटे त किछ नहीं टाइम टेकिंग आउ बोले मु जमते. ओके सो लेट्स से इंडिया. तो ये इंडिया मैप रे जदी हम देखिबा दैट मींस ए गोटे बायोस्फीयर एटे तो लाइफ हैबिटेशन हे परिबो ताकू हम भाग करके बायोम रे कन्वर्ट कर देले. ओके से तोर ह्यूमिड हे गेला डेसिडियस हे गेला बस. ओके बायोजियोग्राफिक रीजन कहले कोन आकू रट्टा मारिया पे चेष्टा करिवनी. व्हेन आई से बायो तापर कहली जियोग्राफिक कहले फॉर्मेशन अनुसार कैरेक्टरिस्टिक्स अनुसार यूनिकनेस अनुसार हिमालय गोटे यूनिक लैंडफॉर्म, डेजर्ट गोटे यूनिक, सेमी एरिड गोटे यूनिक, वेस्टर्न घाट यूनिक, डेकान पेनिनसुला यूनिक, गैंगेटिक प्लेन यूनिक. केही का सहित मिसु नाही. समस्तଙ୍କର यूनिक फीचर जो मानकर यूनिक फीचर अछि से मानको गोटे गोटे कैटेगरी रे रखि देले. एंड दैट इज द बायोजियोग्राफिकल जोन. व्हेन आई से बायोजियोग्राफिकल जोन दैट मींस द बायोजियोग्राफिकल जोन्स आर named on the basis of uniqueness. But that is the uniqueness. जेमती हमें कहले लेट्स से मु एठी कहली कोस्ट. अच्छा कोस्टल रे जो लैंड देखाउची तार जो सेठी जो बाली देखाउची कि वाटर अछि से तो तमरो गैंगेटिक प्लेन से तो समान न आर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स अलगा आर गोटे कैरेक्टरिस्टिक आर गोटे अलगा. सो दैट इज वी आर हैविंग 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स. What? On the basis of uniqueness, on the basis of formation, on the basis of characteristics of that particular region. These are the zones. Here you can see. Okay. ये आर गोटे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोटे यार गोटे ये so everybody here is having uniqueness. देन वाइल्ड लाइफ हमें देखा हिमालय रे कौन कौन अच्छी तुमको देखा हिमालयन माउंटेन सिस्टम हमें देखा. वाइल्ड लाइफ डायवर्सिटी कही कहले हिमालय रे कौन कौन देखा जाए. हिमालय रे तुमको देखा एठी कौन देखा जाए एठी तो जानछ लो रेनफॉल रहिबो हेवी स्नोफॉल होई ए सब तले एई भले कंडीशन रे को प्रकार डायवर्सिटी देखा जो. वाइल्ड लाइफ डायवर्सिटी मींस व्हाट? बोथ फ्लोरा एंड फौना. लेट्स से आई विल कम टू द फौना हिमालय रे कौन देखा जो एलिफेंट उत्तराखंड रे देखा जो सांबर स्वाम्प डियर चीता हॉक डियर ये सब तुमको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन हंट रीनो राइनोसर बोफाल दीज आर द थिंग्स ये रहला तुमरो. जदि तुमको फ्लोरा तो एठी कोन सिल्क कॉटन ट्री देखा जो सावाना बीच देखा जो ग्रास भी देखा जो बांबो देखा जो साल भी देखा जो तुमको सर साल भी देखा जो बिल्कुल देखा जो फुटिल ऑफ हिमालय देखा जो कोठी देखा जो फुटिल साल सोटो बेस्ट क्वालिटी साल टेर कोठी मिले वेस्ट बेंगल ध्यान से मन रखिबो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ साल ट्री वेस्ट बेंगल रे मिले कारण साल रो गोटे कंडीशन दरकार तापे गोटे अछि जो माने फॉरेस्ट पिला से माने बुझी परिबे कहले कि ओडिशा इज द ट्रांजिशन जोन जो ठिकी ओडिशा रु नॉर्थ को गले साल डोमिनेट करिवो ओडिशा रु साउथ को गले सागवान डोमिनेट करिवो. ओके सो दैट इज द नेचुरल कंडीशन बुझि परछो नै. तो एमती
दैट मीन्स से तुमको जो बेंगल फुटहिल्स आम जहाँ कहे शिवालिक सो शिवालिक इज बेस्ट दैट वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ साल यू कैन फाइंड इन द बेंगल्स हिमालयन रीजन रे तुमको मिल ये रहा फ्लोरा फोना है ना ये देखा जाए हिमालय रे ठीक अच्छे सेमती तुमको देखा वेस्टर्न हिमालय रे कौन देखा तो सेम से तुम डियर देखा काश्मीरी स्टाक है ना आपको कौन कह जाए एनीवन काश्मीरी स्टाक इज फेमस फॉर व्हिच नेशनल पार्क और सेंचुरी एनीवन दाचिंगम नेशनल पार्क दाचिंगम नहीं सेंचुरी नेशनल पार्क अच्छी तुम दाचिंगम कौन पे जाए काश्मीरी स्टाक पे आपको हनबुल भी कहती डियर स्पीसीज एटा कौन डियर स्पीसीज ना बुझा पड़ोनी वल्चर देखा तुमको ये स्नो लेपार्ड तो देखा ना बरफ अच्छे मैंने स्नो लेपार्ड तो रही अच्छा ये ब्राउन बियर अच्छी इंडिया रो लार्जेस्ट कार्निवरस जानते ना जानना कथा द लार्जेस्ट कार्निवरस ऑफ इंडिया इज द ब्राउन बियर कोठी रुए लेह रे रोचे ब्राउन बियर इंडिया इज हैविंग क्वाइट गुड नंबर ऑफ ब्राउन बियर दे आर एंडेंजर्ड नॉट क्रिटिकल एंडेंजर्ड देन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट टाइबेटियन एश देखा तुमको ओके तो ये सब तुमको देखा फ्लोरा मुझे फोना दीज आर द फोना द रोडेडेंड्रम ये तो आर फूल बहुत बढ़िया फूल फुटे है ना बांबू देखा रोडेडेंड्रम देखा पाइन देखा कनी फॉरेस्ट देखा कनी फॉरेस्ट है ना ये तो देखा तुमको देन विलो ये जो क्रिकेट बैट तैयारी हुए विलो फॉरेस्ट ईस्टर्न हिमालय कहले आमर ईस्टर्न हिमालय कहले बुझी पार दिस पार्ट ऑफ हिमालय है ना बेंगल सब रीजन ये कौन देखा बांबो देखा देन तुमको आउ कौन देखा देखा ऑर्चिड देखा हाँ ये बहुत इंपोर्टेंट ऑर्चिड सब अधिक कौटी देखा जाए अरुणाचल प्रदेश ध्यान से मन रख ऑर्चिड एपिफाइट्स देखा रोडेडेंड्रम तो कॉमन हिमालय सारा देखा जाए रोडेडेंड्रम लिसेन मॉसेस ये तो देखा पाइन देखा फिर देखा कनी फॉरेस्ट जोटा तुम कनी फॉरेस्ट जहाँ हमको ओक तो देखा रेड पांडा देखा जाए जानचो तुम हॉक हॉलो गिबन्स देखा जाए राइनो देखा जाए एलिफेंट देखा जाए फ्लाइंग स्क्विरल देखा जाए ये सब देखा जाए ना ईस्टर्न हिमालय रे अरे एगुड़ा तो पढ़ी ना पढ़ी न कहीं फ्लाइंग स्क्विरल रेड पांडा ये सब पढ़ी ना पढ़ी न पिग्मी हॉक Yes, sir. पिग्मी हॉक एनीवन व्हाट इज पिग्मी हॉक द स्मॉलेस्ट पीक कोटी देखा जाए आसाम रिनो कोटी देखा जाए आसाम फ्लाइंग स्क्विरल कोटी देखा अरुणाचल प्रदेश रेड पांडा कोटी अरुणाचल प्रदेश पांडा आउ कोटी देखा तुमको जाइंट स्क्विरल देखा जाए अरुणाचल प्रदेश मेघालय रे जाइंट स्क्विरल देखा जाए फ्लाइंग स्क्विरल देखा जाए हॉर्न बिल देखा जाए यहाँ सब मुहर रहा दरकार ये सब स्नो लेपार्ड्स देखा बुझीपार कि नहीं ये कहला मैंने तुरंत कह टाइगर भी देखा एलिफेंट भी देखा एंड आसाम इज हैविंग द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर सॉरी एलिफेंट इन इंडिया आफ्टर कर्नाटका ध्यान से मन रखो कर्नाटका इज हैविंग हाईएस्ट एलिफेंट आसाम इज सेकंड थर्ड इज योर केरला फोर्थ इज तमिलनाडु तो ये सब मन रखियो करेंट अफेयर पार्ट को कवर करियो है ना आउ कौन देखा जाए तुमको नॉर्थ ईस्ट इंपोर्टेंट आउ फ्लोरा फोना कौन रहिबो एनीवन नॉर्थ ईस्ट आउ किए किछि जानिछ ओके ठीक देखी दियो पेनिनसुलर रीजन रे फ्लोरा फोना कहि परबन जेंति तुमको साल देखा जदि आम फ्लोरा रे देखा अच्छा फोना तो समस्ते जानिछ फ्लोरा रे कौन देखा आम सागवान देखा सागवान को कौन कह जाए एनीवन कौन कह जाए कौन कहती किसी कहती नहीं रोजवुड देखा जीवनी रोजवुड सैंडलवुड रेड सैंडल सब देखा जीव है कि मत लगुच तुमने किसी पढ़ी ही ना हैं सुजाता कौन किसी पढ़ी न कि तुमने ताले पेनिनसुलर कौन देखा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस देखा ड्राई डेसिडस देखा एवरग्रीन देखा ये सब फॉरेस्ट देखा प्लस राजस्थान रे तुम जानछ जेरोफाइटिक्स देखा ये सब तुमको मन रखा पड़ो जमी एलिफेंट देखा जाए वाइल्ड बियर डियर सांबर नीलगिरी थार होगा ब्लैक हॉक होगा धोले देखा टाइगर लेपार्ड चीता तो ये आसी छाड़ वाइल्ड पिग देखा मंकी देखा जैकल्स इंडियन गौर ये तो ना शुणी थो ना इंडियन गौर सब लार्जेस्ट ना सेकेंड लार्जेस्ट आफ्रिकान गौर सब लार्जेस्ट गौर डेजर्ट कौन देखा जाए स्नेक लिजार्ड
टर्टोइज ये सब देखाज कैट डेजर्ट कैट ब्लैक बक कथा आसिले सलमान खान कथा मन पकईदेव एशियाटिक वाइल्ड एस रेड फॉक्स काराकल लिजार्ड देखाଯିव डेजर्ट लिजार्ड बहुत थाए आउ सब इंपोर्टेंट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड द स्टेट बर्ड ऑफ हुम राजस्थान ना मन पड़ुनी ये सब मन पड़ुची एगुड़ा पचारुची ना तुम पचार ग्रेट बर्ड ये सब यार कौन क्रिटिकल एंडेंजर्ड ये कौन क्रिटिकल एंडेंजर्ड केतेटा स्पीसीज बंची आप को नेशनल पार्क अच्छी डेजर्ट नेशनल पार्क कौन डेजर्ट नेशनल पार्क साधारणतः दैट इज द ब्रूइंग वंस है ना फना ये देखले आउ जदि तुम कह फ्लोरा कौन देखा जाए थर्नी देखा जमी कैक्टस देखा कैक्टी डेट्स देखा देन ग्रासेस देखा डेजर्ट रे पाम ट्री देखा दीज आर द मतलब जोड़ा कि जेरोफाइटिक्स जहाँ आम कौ कौन जेरोफाइटिक्स जो मैंने डेजर्ट को आडप्ट कर दियंते वाक्सी थी लिप्सटा स्टोमाक क्लोज करदेव थिक थी हाइट कम थी लंग रूट थी तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स थाए हियर यू कैन सी द डेजर्ट एनिमल्स और फौना ये देखो फौना कैमल आसी जीवो दैट इज अ गेको है ना स्नेक भी अच्छी तो टॉर्टोइज वगैरह सब तुमको ये देखा जो डेजर्ट एनिमल्स sand cat desert tortoise everything is there. Next tropical rainforest that means आपको हम कहते evergreen forest western घाट रे देखा जो नॉर्थ ईस्ट रे देखा जो ये तो ऑलरेडी पढ़ी छे जदि फ्लोरा देखिबा ना एठी कोन देखा जो सोलास ये बहुत इंपोर्टेंट कोठी देखा जाए नीलगिरी हिल रे सोलास नीलगिरी हिल सोलास कौन नीलगिरी हिल देखा जाए ध्यान से मन द फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी हिल आल्सो कॉल्ड एज द सोलास सेल्वास नो सेल्वास होची अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाए सेल्वास एवरग्रीन फॉरेस्ट आल्सो नोन एज द सोलास इन नीलगिरी रीजन एठी ऑर्चिड देखा जबो हियर विल हैव वाइन्स ये सब तो तुमको देखा जबो बाकी फोना तुम कोन आउ कहबी फोना तो सब लेखि देबो कोन नीलगिरी लांगूर लाइन टेल मकाओ ओके पिग्मी सॉरी एटा कोन नीलगिरी थार फ्लाइंग स्क्विरल मंगूज अंडमान निकोबार को आसो तापरे क्रोकोडाइल तो अवश्य रहिबो कोक ये देखो कोकोनट क्रैब नडिया गछरे चढ़ी की सेतर हुए लिजार्ड वाइपर कोबरा ये तो कोबरा तो इंडिया सारा देखा जाए कौन सी स्नेक रहिबो पाइथन रहिबो दिस आर आल्सो देयर फौना रे देखा जो तो हॉर्नबिल भी देखा जो तुमको नारकोंडा हॉर्नबिल हियर यू कैन सी दिस आर द डाइवर्सिटी हमें देखु छे और जो हॉर्नबिल कथा हॉर्नबिल टा मन रखो हॉर्नबिल तीन जगह रे देखा जाए गोटे होची तमरो नॉर्थ ईस्ट गोटे होची वेस्टर्न घाट गोटे होची अंडमान निकोबार ध्यान से मन रखो बट द लार्जेस्ट हॉर्नबिल कोठी देखा जाए जो आमर ग्रेट इंडियन जोटा को कहते वेस्टर्न घाट ध्यान से मन वेस्टर्न घाट सब बड़ हॉर्नबिल देखा जाए मीडियम टा देखा जाए तुमको नॉर्थ ईस्ट रे स्मॉल टा देखा जाए नारकोंडाम रे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड रे हुए है ना और तार बिग टा बहुत बड़ थाए तार जो थंटटा बहुत ही बड़ थंट थाए बुझी पारछ बड़ थंट तार देहटा छोटियाटा थिबो किंतु थंटटा बहुत बड़ थिबो मतलब रिलेटिवली लार्ज बिग मैंग्रोव रे जानछो कोन कोन देखा जाए क्रोकोडाइल तो देखा जो डियर तो देखा जो पिग तो देखा जो लिजार्ड देखा जो स्नेक रॉयल बेंगल टाइगर मंकी एक्सेट्रा और स्नेक तो रहिबा कि रहबो किंग कोबरा है ना किंग कोबरा कौन स्नेक फीडर शायद किंग कोबरा विषय कहीं जानी ना किंग कोबरा इज द लार्जेस्ट स्नेक अमंग ऑल केते ग्रो करिवो 20 फीट्स इट कैन स्टैंड अप टू 6 फीट्स केते 6 फुट किया है कि गोटे 6 फीट ह्यूमन रो फोरहेड रे से बाइट करिवार एबिलिटी थाए एंड आकु ये सबले कोन किंग नेस्ट करे आकु कह जे नेस्टिंग स्नेक डांस मन को किंग कोबरा नेस्ट रुहे से कबे एमिति रुहे रे आ से जोठी रुहे ता आखपाख एरिया को पूरा क्लीन करके रखे सेथुर जाना पड़ जो हियर इज द रीजन फॉर द किंग कोबरा केबे मनीष को अटैक करे नहीं अनलेस अंटिल तमे ताको अटैक न करिचो बिकॉज से तार ह्यूमन हैबिटेट को आसे कोन पे साप को गोड़े कहना से साप खाए और तार सब फेवरेट स्नेक कौन जान वाटर स्नेक एंड ढमना ये मान को से तार फेवरेट डिश से ताको खाई बंचे स्नेक फीडर और किंग कोबरा तार आउ गोटे नेचर कौन से स्वाम्पी एरिया रे रुहे से सब स्वाम्पी एरिया को प्रिफर करे कौन पे सेठी ढमना रहिबो वाटर स्नेक रहिबो से ताको जो धंड साप खाइबो ताको
एथमे से किंग कोबरा रो एटा अछि जानिबो दिस इज द इंडिकेटर ऑफ किंग कोबरा तो जदि केबे कोबरा विषय जानियर अछि फोन कर पचार हम कहितबी कोबरा रो बिहेवियर कोन मोनोसिलेट कोबरा अछि बाइसिलेट कोबरा अछि किंग कोबरा अछि तो सेमान को पॉइजन पुनी डिफरेंट लेट्स से हमें कहै छै कॉमन क्रेट अछि बैंडेड क्रेट अछि तो स्नेक रो भी डाइवर्सिटी अछि है ना कॉमन क्रेट कोन करे बैंडेड क्रेट केते बड़ा से नॉक्चुनल बैंडेड क्रेट किंतु कॉमन क्रेट को भी खाइ जाय से भी स्नेक फीडर है ना तो बैंडेड क्रेट केमती थाए एमती ट्रायंगल शेप रो थाए ता बॉडीटा तो ये सब तमे दरकार नहीं बट आई एम हैविंग मतलब क्यूरियोसिटी से मु जानि के रखी छी जे भी हो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हमर दीटा हॉटस्पॉट अछि है ना के देथिला नॉर्मन मेयर ए क्वेश्चन आसीथिला ए सॉरी ए सो क्वेश्चन डायरेक्ट ओके ताले हम देखिबा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहले कोन वेरी हाई रिच स्पीसीज ने जोठी थिबो एंडीमिज्म बहुत थिबो दैट वुड बी ओके ताको हम कहबा इट मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट मु कहितल देखा 1500 प्लांट रहबा दरका वास्कुलर प्लांट बहुत इंपोर्टेंट क्राइटेरिया एट लीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वास्कुलर प्लांट रहबा दरका से रीजन रे कोन 70% or the 70% has lost the biodiversity of that original habitat is lost. It must have 30% or less of its original natural vegetation. In other words, it must be threatened. That means simple जदि मु कहि biodiversity hotspot होछि गोटे large area जोठी biodiversity बहुत अछि species richness अछि but threatness also there. Then everyone, biodiversity hotspot of India: Himalayan region, Indo-Burma region, that is the northeast, Western Ghat and Sunda land. 4 hotspot we are having. This is very important. 4 hotspot. Okay, in the map you can see this one. These are the hotspot of India. 1, 2, 3, and this one is 4. हॉटस्पॉट और बायोस्फीयर रिजर्व सेम ना अलग अलग सर कौन कहलो हॉटस्पॉट और बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर्स एगुडा को गुटे ना अलग अलग सर जो बायोस्फीयर hotspot is a part of biosphere. Biosphere means large concept as biosphere. For example, suppose मु कहली वेस्टर्न घाट, लेट्स से फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट रो एक एते बड़ एरिया टा अछि है ना किबा हिमालय एबे देखो हिमालय गोटे कोन ये गोटे बहुत बड़ हमें कहबे एरिया ये गोटे बायोस्फीयर मतलब जोठी लाइफ कैन बी पॉसिबल बायोस्फीयर ताको हमें सेटा हॉटस्पॉट हेई पारे न हेई पारे दैट डज नॉट मीन ऑल बायोस्फीयर आर द हॉटस्पॉट फॉर एग्जांपल एटा देखो ये भी तो गोटे बायोस्फीयर पार्ट ना बट ए तो हॉटस्पॉट नो व्हाई बट हॉटस्पॉट पे कोन दरकार रिचनेस दरकार and threatness, 2 things, richness and threatness. So all biosphere not hotspot, but all hotspots are biosphere. Na bujha padi bani be done everyone everybody be सर वेस्टर्न घाट रे गोटे बायोस्फीयर अछि ना नीलगिरी बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व कथा मु कहनी भाई बायोस्फीयर रिजर्व is different, biosphere is different. Got my point? When I say biosphere reserve, that time you can say Nilgiri Hill, Agastya Malaya Hill. So these are the biosphere reserve. When I say biosphere, कहले बहुत बड़ा एरिया कथा हम कहूची. Reserve is a small place. When I say biosphere, कहले जोठी life possible. एटा reserve is अलगा. Reserve कहले तार गोटे छोटिया पार्ट जाको हमें प्रोटेक्ट करूचे. ना बुझा पड़िबो नै बे? बुझा पड़ले. ओके सर. बुझी पड़ले. So this was all about the 2 years class. और एथरो बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुमको सॉल्व करि परबो इजीली. एथरो क्वेश्चन त आसबे त किसी डाउट नहीं बट वो क्वेश्चन है सो मु कहि परबिनी. इधर दे कैन आस्क हॉटस्पॉट, दे कैन आस्क यू दे फटाफट देखि दउ जे मु कोन कोन आज पढि छै. बायोडायवर्सिटी रो कांसेप्ट पढि छै हमें. बायोडायवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस कोन इवनेस कोन पढि छै हमें. बेटा गामा अल्फा ये सब पढि छै. जेनेटिक डायवर्सिटी भी पढि छै. ये देखि दियो एथरो क्वेश्चन ऑलरेडी बायोम कोन पढि छै. 0 रो मीनिंग कोन, 1 रो मीनिंग कोन कहै छै, स्टेबिलिटी कोन. एबे लेट्स से गोटे सिंपल एग्जांपल तुमको पचारिबी. एठी गोटे कंडीशन मु देइ छी. लेट्स से इफ आई आस्क यू ये जो लिखे छै ना स्टेबिलिटी, हियर इज रिटन व्हाट स्टेबल कम्युनिटी. अच्छा मते को एमती गोटे इकोसिस्टम इंडिया रो छी दैट इज वेरी मच स्टेबल दैट दे कैन अडॉप्ट इनटू द सिचुएशन. स्टेबिलिटी केतले रहिबो भाव गोटे ह्यूमन बीइंग
स्टेबिलिटी केते रहइबो जेतरो से सिचुएशन को असेस करि परिबो सिचुएशन को फेस करि परिबो दैट मींस रेजिलियंस सेतरो स्टेबिलिटी बढ़िबो नहले तो खत्म हे जिवो तारि एमिति को स्पीसीज होची तार स्टेबिलिटी बहुत अधिक फॉर एग्जांपल मुखे क्रोकोडाइल मरु ही नाही को बले आसिले भी से तार संभाली बंची जाउची सो लाइक दिस एई बले स्पीसीज माने स्टेबिलिटी अधिक थाए ह्यूमन बीइंग कथा नहीं जाओ ना से खत्म ही हबनी से बहुत रेजिलिएंट तो एंडेमिक कौन हॉटस्पॉट कौन पैंडेमिक कौन नेटिव कौन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन ये सब बुझी पारिबो एंडेमिज्म कौन की स्टोन स्पीसीज कौन है ना प्लस फाउंडेशन स्पीसीज मु तुमको कहि आ फाउंडेशन स्पीसीज ऑलवेज प्राइमरी प्रोड्यूसर फ्लैगशिप स्पीसीज कौन कहि एंड दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी आ एथरे जो स्लाइड रे देछि मोर देन शंकर आईएएस मन रखिबो एटा शायद आज तुमको रियलाइज हबनी किसी दिन पर रियलाइज हो हाँ सर ठीक कथा कहते दिस थिंग्स आर सो मच एनफ मोर देन एनफ बट ओनली रिविजन इज रिक्वायर्ड दिस इज द नॉट टाइम फॉर मी एज वेल टू गो थ्रू द वन बाय वन अदरवाइज आई कुड हैव कवर्ड एनवायरमेंट इन ए मतलब गुड फैशन वे और है ना और जहाँ को जदि दरकार डेप्थ रे एनवायरमेंट कहा को दरकार यू कैन परचेज द कोर्स recorded videos अछि you can go to the ways of what app to जाइकी सेट स्टोर रे जाइकी you can purchase the recorded there would be how many अछि मतलब मन नहीं videos are there